Ram Lalla's idol installed inside sanctorum today. All eyes on the grand Pran Prashishtha now. Stalin Jr. provokes with mosque demolition remark. Akhilesh Yadav's leader insults Ram Bhakt, says Karsevaks fired upon to protect the constitution. Karnataka Congress unit breaks ranks, says will visit Mandir. Under the lens for Liquorgate, Kejriwal skips the enforcement directed summons again. BJP hits out, asks what's he hiding. Tonight on This is Exclusive, we take you through three first important stories that are coming in from Kashmir, where we take you through what really stands in an ancient temple, and is it only about Ayodhya? What are the preparations that are essentially taking place in temples across the country? In fact, this report comes in from North Kashmir's Baramulla district in Rasai Tank, an ancient temple. This report has been filed by my colleague Arawat, and this is just the beginning. Republic TV has been leading the coverage, getting you reports from across the country, starting all the way from Kashmir down south in Kanyakumari. What exactly is happening? How exactly are the temples also being revamped? Take a look at this special report coming in from North Kashmir. अयोध्या से पहले कश्मीर घाटी में अगर हम देख रहे हैं, लगातार कश्मीर घाटी में जो मंदिर हैं जो कि 1990 से पहले कश्मीर घाटी में बंद हुए थे, हालांकि उनकी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान द्वारा कश्मीर घाटी जो टेररिस्ट आए थे उन्होंने बंद करवा दी थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी में फिर से किस तरह से एक्टिविटी शुरू हो रही है। कश्मीर की अलग अलग जगहों से यहाँ लोग आते हैं, यहाँ पर जो रिचुअल्स होते हैं उनमें यहाँ पर पार्ट लेते हैं। उसके साथ अगर हम इस हिस्ट्री की बात करें, जो ये मंदिर है, हालांकि 1990 से पहले की अगर हम बात करें, इस मंदिर को पाकिस्तान के द्वारा मिलिटेंट ट्रूप को जलाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बीएसएफ को डिप्लॉय किया सुरक्षा के लिए। इसके साथ साथ इस पूरी हिस्ट्री को जानने के लिए हम यहाँ के कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो काफ़ी टाइम से इस मंदिर के हवाले से जानते हैं, यहाँ वो आते भी हैं। हालांकि दोनों कम्युनिटी की हम बात करें, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें या हिंदू कम्युनिटी की बात करें, जो कंप्लीट डिटेल हमें बताएंगे कि मंदिर जो है जहाँ पे लॉर्ड राम आते थे और क्या कुछ एक्टिविटी यहाँ होती थी। हालांकि मेरे वीडियो आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अभी भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है जय राम के भी यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं। अलग अलग जगहों पे हमने कुछ कुंड, यहाँ पे 7 कुंड जो हैं वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पर भी इस तरह की राइटिंग्स में लिखा हुआ है। काफ़ी पुराना हिस्टोरिकल मंदिर ये नॉर्थ कश्मीर का है। भगवान राम का ये वो यहाँ पे अपने वनवास के दौर में आए हैं और राम को सुना है कि क्या मान्यता भी है कि उन्होंने वहाँ पे हवन रचाया राम कुंड सीता कुंड में, और उन्हीं के आने के बाद भी वहाँ पे वो मंदिर भी बना हुआ है। कितने कुंड हैं? अगर हम कोस्टल टैंक की बात करें, वो उनका बताइए क्या कुछ इम्पोर्टेंस है उनको? उसमें 7 कुंड हैं मंदिर, उसमें पानी भी होता है। वो राम कुंड, सीता कुंड, भरत कुंड, शत्रुघ्न कुंड, ये 5-6 नामों से, हनुमान कुंड, ये 7 नामों से जाने जाते हैं। और एक कुंड की इतनी मान्यता ये है कि उस वहाँ पे सीता माता खुद ही नहाने का या अपने उनका क्या करना होता था उनका वहाँ पे होता था, और वहाँ पे लोग भी जाते थे। अब 90 के बाद अब बहुत कम जाना है, नहीं तो वहाँ पे हवन भी होता था। ये आषाढ़ मास में हवन भी होता था। लोग जाते थे, बारामूला से ही नहीं सारे ज़िले के लोग भी वहाँ पे आते थे और हवन में शमूलियत करते थे।
अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, अभी कितना क्या इंपॉर्टेंस है जहां अयोध्या का हिस्टोरिकल इनॉग्रेशन जो होने जा रहा है? भगवान राम ने को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा बनाई है। अपने माता पिता ने जो उन्होंने उनको हुक्म किया, वो हुक्म की मान्यता की। उसके बाद उसने जाने के वक्त अपने छोटे भाई को राजपाट त्याग दिया। इसलिए ये इसकी मान्यता ही मान्यता है। इसीलिए तो इस वक्त जो वहाँ पे मंदिर बन रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि वहाँ पे ये 500 साल के बाद मंदिर बनाया जा रहा है। जहां अयोध्या का हिस्टोरिकल सेलिब्रेशन होने जा रहा है, वही अगर कश्मीर घाटी के मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जो बारामूला में स्थापित यहाँ पे शिल्पोत्री मंदिर है, या उसके साथ और भी राम टेम्पल कहीं कश्मीर घाटी में है, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है परवेज सलाम। आप मुझे बताइए, बारामूला की गौसल टेम्पल की हमें हिस्ट्री बताइए, क्या कुछ रहा है? देखिए रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझसे ये बात पूछी। अगर बारामूला की हिस्ट्री के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप देखेंगे कि बारामूला का असली नाम बारामूला नहीं, विहारमूला है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर मज़हब से से जुड़ा हुआ शख्स यहाँ पे आते थे और इंसानियत की बहबूदी के लिए वो काम करते थे। जहाँ तक आपका सवाल है गोसनटेंग मंदिर का, ये मंदिर है, मेरे फोर फादर जो हैं वो इसके केयर टेकर रहे हैं। मैंने अपने दादाजी के साथ वहाँ पे गया हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम जी को वनवास के लिए भेजा गया, उनके साथ माता सीता भी थी और लक्ष्मण जी भी थे, तो वो यहाँ पे आए हैं गोसनटेंग में, जिसका ये मतलब है, कश्मीरी में हम इसे गोसनटेंग कहते हैं, और अगर उर्दू में मैं इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ तो इसका माने ये होगा ऋषियों और मुनियों का स्थान, जो कि बहुत एक ऊंचाई पर मौजूद है, वाक़या है। और जैसा सुनने में आया है, तारीखदान से मैं सुन चुका हूँ या अपने फोर फादर्स में सुन चुका हूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे मन को बिल्कुल शांति मिलती है और पूरे बारामूला का नज़ारा होता है। तो खुसूसन मैं यही दुआ करूँगा कि जैसे पहले माहौल था, वहाँ पे बड़े दिन होते थे जिनको हम शीशनेर बड़दोह के नाम से जाने जाते हैं। हमारे ऋषि और मुनि वहाँ पे आया जाया करते थे, बहुत सारे लोग कश्मीरी वहाँ पे अपना रोज़गार चलाया करते थे, लेकिन अफसोस हालात की वजह से वो धीरे धीरे कम होता गया। मेरी नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी तारीख के अवराक को देखें, हमारे साथ क्या क्या हुआ है, हमें किस बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ाया गया है, उसको ख़त्म करें। और जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स है, उस पर अगर हम चले तो मेरे ख्याल से ये हिंदू मुस्लिम फसाद जो है ये बिल्कुल नहीं रहेगा। हमारा देश जो है ये बिल्कुल पुरअमन रहेगा, शांति से सभी रहेंगे, सभी लोग अपने मज़हब की पासदारी करेंगे। विद विजय फिरदौस, रावत महराज, बारामूला, कश्मीर। After Kashmir, let's now take you to Jammu, where my colleague Gursumran travelled to the outskirts of Jammu to meet a special Karsevak. Sanjay Kumar happens to be one of the youngest Karsevak who participated in the second Karseva back in the year 1992. In this report, he basically narrates about how he braved all odds to participate in the Karseva and how has the journey been like. Remember, it's been an arduous journey for several Karsevaks who've been participating in what many consider a celebration of India's ancient civilization. जी मुझे ये बताइए 1990 पहली कार सेवा क्या हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास है इस मंदिर का। जब जय श्री राम जी, जब 1990 में कार सेवा का काम शुरू हुआ तो हर ज़िले में, हर गांव में एक संदेश गया कि चलो वहाँ राम जी का कार्य के लिए चलना है। तो जब यहाँ से गए, देश दुनिया से हर जगह से लोग गए, तो हमारे महाराज जी उस टाइम अपनी जोश और जवानी में थे। ये भी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ से गए, इनके साथ में 2 शिष्य गए। जब दोनों शिष्य वहाँ गए तो जब ये लेट पहुँचे तो बताते कि वहाँ हमको रोक दिया गया। तो कुछ ऐसे थे जो तैराक थे कि उन्होंने सरयू में रस्सा बांधा और सरयू रस्से के सहारे रातों रात अंदर गए। बहुत से कार सेवक है जो रातों रात रस्से के बल से अंदर गए। कुछ कार सेवक ऐसे हुए कि नहीं पकड़ पाए और सरयू में भी बह गए, वो वहीं अपना शरीर को उन्होंने निछावर कर दिया। जब ये सुबह पहुँचे तो वहाँ एकदम बस एक ही नारा लगा के चलो जय श्री राम और बाबरी ढांचा को गिराना है। और काफ़ी नेता थे, बड़े जोशीले भाषण दे रहे थे। जब ये बताते हैं कि गुरुजी और शिष्य दोनों वहाँ आगे बढ़े तो मुलायम सिंह की सरकार थी, उसने आदेश दे दिया कि कोई भी कार सेवक और मस्जिद के पास, बाबरी मस्जिद के पास नहीं जाने पाए।
जब वहाँ कुछ कार सेवक कुठारी, वो बताते कुठारी बंधु तो ऊपर चढ़ गए थे, उनको ऊपर से ही गोली मारी गई थी। इनके जो शिष्य थे, ये गुरुजी पीछे जा रहे थे, शिष्य आगे आगे जा रहे थे। इनको पास ही आया और आर्मी वाला, पहले पुलिस वालों ने रोका कि भाई ये आगे बढ़ने से पीछे हो जाओ, उन्हीं गोली मारी जाएगी। लेकिन इनके अंदर एक ऐसा जुनून था कि ये पीछे मुड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बताते हैं, महाराज जी बताते हैं कि एक गोली मारी, एक शिष्य को गोली मारी। उसको जैसे गोली लगी तो उसने उठाया, उसने देखा ये तो शरीर छोड़ चुका है। उसने जय श्री राम का नारा लगाया, वो भी आगे बढ़ गया तो उसको भी गोली मारी गई। उसको गोली मारी तो उसने आवाज़ लगाई, महाराज जी मुझे तो गोली लग गई है। बोले कोई बात नहीं है, गोली लग गई है तो क्या हो गया है, राम के कार्य में तो जा रहा है, आया इसीलिए था। महाराज जी भी उठे और महाराज जी ने जल्द उन्होंने महाराज जी को भी गोली मारी। तो महाराज जी को गोली मारी, लेकिन इनके पैरों में गोली लगी, ये भी गिर गए। तो उनको उठा करके बताते सरजियों में बहा, जो भी जितने कार से वो गोली चल रही थी उठा करके सरजियों में फेंकते जा रहे थे। महाराज जी को उठा करके जब लाए तो इनको होश आया, तो इनको गाड़ी में रखा और जेल में डाल दिया। जब ये जेल में गए तो कई दिन के बाद निकले, वहाँ से निकले उन्होंने एक ही प्रण लिया कि मैंने अपने 2 शिष्य यहाँ शहीद, मेरे 2 शिष्य शहीद हुए हैं, मैं राम जी के पास आऊँगा, आस्था वही है, लेकिन जब राम जी मंदिर में स्थापित होंगे तब मैं यहाँ दर्शन करने आऊँगा, नहीं मैं दोबारा आऊँगा नहीं। वहाँ से चरणोपात कर लिए उन्होंने, उठा करके लाए, इनकी पूजा सेवा। शिष्य जो है वो नहीं आए, लेकिन ये चरण पादुका वहाँ से चरणोपात का ले आए, बस चरणोपात का लाए, बोले कि मैं इनकी ही पूजा करूँगा और जब मंदिर में राम जी विराजमान हो जाएंगे तब मैं जाकर के राम जी के दर्शन करने जाऊंगा वहाँ। आज भी इस चरण पादुका की पूजा यहाँ पर रोज होती है? बिल्कुल, आज भी इनकी पूजा सेवा होती है, सुबह शाम उनको ही, शहीदों को इनके। आप तो बड़ी खुशी हुई है कि अब उनके जो सच्ची श्रद्धांजलि मोदी ने ही दी है कि जहाँ उन्होंने शहादत किया है जिस काम के लिए, आज वो काम पूर्ण होने जा रहा है। 22 तारीख को हमारे राम जी और मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। 33 साल से यहाँ के महाराज जो हैं वो राम मंदिर नहीं गए 33 साल से। हाँ, जब से वो हुआ ना तब के बाद गए। हमको ही 20-22 साल हो गए, अयोध्या जाते हैं, हर साल जाते हैं और विवाह पंचमी मनाते हैं। हम महाराज जी को बोलते ले, महाराज जी बोले जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा, बाकी कहीं भी चलेंगे, राम हनुमानगढ़ी जाएंगे, दशरथ महल जाएंगे, लेकिन उस जन्मभूमि में वो नहीं जाते हैं। बोले कि मैंने सामने देखा है, मेरे शिष्यों को गोली मारी है। अगर बोले मैं चला जाता मुझे अफसोस नहीं था, लेकिन मेरे सामने मेरे शिष्यों को उन्होंने गोली मारी है और मेरे सामने शहीद हुए और मैंने उनको मुखाग्नि भी नहीं दे पाई, क्योंकि उन्होंने उठा करके सीधा सरजू में फेंक दिया। बड़ा चिल्लाए, लेकिन बोले वहाँ सुनने वाला कोई। Let's now take you through a special report coming in from Wayanad in Kerala. We tell you the story of Tirunelli temple, and not just that, a painting of Lord Hanuman on a rock. What's this all about? Take a look at this special report filed by my colleague Ashwin. Searching for many days, in fact, finally we have arrived at the bank of Kalindi river, a river which is flowing very close to the famous Tirunelli temple, known to be as the southern Gaya, and lakhs of people offer Pitra Tarpana, which is Pitra Moksham, also is called as oblation to the mains on this very riverside. So it's very important. And while we have been hearing about a particular inscription and the picture of Hanuman, we have finally found it. And this is that not many people know about this particular drawing which is done on this rock. Now, if you look at this particular rock, it definitely looks ancient, because you can see as if there's a lava flow that has come through it. You can see the structure of this rock, and there is certainly very ancient, probably the lava burst that happened before the formation of Deccan Plateau itself could be an indication of this. But what is mesmerizing is this particular drawing which is over here. It shows Hanuman, and next to that you also see in a square a print of footprint, and underneath written a text, and it's written in Kannada, and it's called as Behrucha. Now, this Behrucha is in fact a very Vedic word.
In fact, the Malayalam translation, what we found from one of our expert who had also joined us, he said there is a process of learning a particular way of doing tarpana and many other rituals related to Hinduism. So that particular word, broad definition, is what is called as Tagariyam in Malayalam, and Pagariyam in Malayalam, and the translation of that is Beharucha. So here we see Lord Hanuman on a rock. You can see the entire rock, feet of Sri Rama, and Beharucha, a Vedic word written. It is absolutely mesmerizing. You know, Jan 22nd, Ayodhya Pran Prashishtha is going to take place. And in Wayanad district, we are very close to the borders of Karnataka. The Nagara-style is very close. The Nagara-style Tiger Reserve is so close by. And just on the border, we can see a beautiful, beautiful drawing on the rock. And this certainly feels extremely satisfying to find it. So he is somebody who, Sukumaran is somebody who helped us find this place. After much research, we finally found this place. So you knew about this place before. How sacred is this place? You have told us that many saints have meditated over here. Is it true? Like, can you? It's a very old place, and here we are also doing meditation here. It's very close to forest and nearby Kudirakod temple. Okay. On this way, Rama and Lavakusha, Sita also may be passed here, Okay. passing way, their way. So certainly look at this beautiful river. I just want our video journalists to pan across and show. This river itself is called as Kalindi River. So it is a connection with Lord Sri Krishna. Is it right? Maybe, because the name Kalindi on the Krishna Yuga. Okay. That is why we are called Kalindi. And also, Krishna means black. And the river, you show the river is all blacky shade. Correct. That is why Krishna and So, Kalindi. Beautiful, beautiful. I cannot express anything more. What we see here is a piece of history probably linked hundreds and thousands of years ago. Somebody has done this, and it's all connected. He says there are many sages who have meditated over here. They have found several evidences for that. The Kalindi River is flowing. Sri Rama's holy feet is drawn over here. Hanuman is there. What more can one ask for on ahead of the Pran Prashishtha in Ayodhya, when today we can find such a beautiful finding in Wayanad, which is so far away, and the stories of Ramayana we can definitely now say it has gone far and wide, and these inscriptions will always remain etched in stone, and so does the memory of Rama and Ramayana will remain forever and eternal. Many forests area and through the waters of Kalindi, we have finally found the inscription of in Kannada with the feet of Lord Rama, as well as a drawing of Hanuman next to it. A drawing that is probably very ancient, which has gone hundreds and thousands of years ago. There are many such spots that are yet to be revealed to the world to know the glory of Lord Rama and of that of Ramayana, and this is just one among them. With video journalist Mani S. from Wayanad, Ashwin Kumar, Republic TV. Let's now take you through a special story coming in from Karnataka-Kerala border. Ladies and gentlemen, much has been spoken about how our temples have been destroyed. There are living examples of how various shrines across the country have been destroyed, and one such example is from this shrine en route to Tirunelveli temple. Now, right in the middle of the forest is a remaining parts
which is completely in ruins. It is said that this was destroyed by the army of Tipu Sultan. Take a look at this special report filed by my colleague Ashwin, which gives you a sense of what entailed in the past and, more importantly, how temples have been destroyed by the Mughals in the past. We are at the Kerala-Karnataka border, and this place is en route to Tirunelli temple. And here, when you go a few meters away from the road towards inside the forest, you can find two shrines. Two of these shrines are similar looking. One of the shrine, which is this one, is facing east, whereas the other shrine, which is adjacent to it, is facing north. Now, these two shrines are that of Lava and Kusha, the two identical twins of Lord Rama and Devi Sita. Now, currently, this shrine comes under a Gauda family, who are based nearby. And the architecture also, if you see, it has got a very distinct Karnataka-style architecture as well. Although this temple, the shrine, which is right now in a dismantled position, it has definitely worn out. It is somewhere in the middle of the forest. The shrine continues to thrive over here. Now, this place is called as Kalishwari temple, and there you can find two identical shrines, and inside we can find two installations which are very identical. And also, what is important to note is that this place, ancient name was called as Kudira Kod. Kudira means horse. So the legend says that when the Ashwamedha Yaga happened, Lava and Kusha has actually stopped the horse at a location, and the people over here believe that this is a location where the horse was taken in control by Rama's two sons. And later what followed was how Lakshmana, how all the others came in, and then the story of Ramayana follows. So a very interesting place, a temple managed by a Gauda family in Kerala border is something that is fascinating, and that of Lava and Kusha, yet another shrine in the middle of the jungle. There are people who said that elephants roam around in this area, and it is very frequent visitors in these shrines. As you can clearly see, there's nothing much remaining. There is not a proper structure. However, this temple, the shrine has survived the time, I must say. We have also been told that during the time of Tipu Sultan, there was an attack in this temple, and most of this temple's property and resources were also destroyed. However, standing tall is still the remnants of the grand glory of Rama and Ramayana. Right now we are at Kalishwari temple, which is deep inside the forest near Tirunelli in Wayanad district. Now this place is very close to the Karnataka border of Nagara-style as well. Now, if you see the architecture of this place, it has a distinct Karnataka flavor to it. And there are two shrines, identical shrines. One is facing north and the other is facing east. The ancient name of this place is called as Kudira Kod, which Kudira means horse. So it is believed that Lava and Kusha, whose shrines are what you're seeing right now, had tamed the Ashwamedha horse in this very spot. Today this temple is managed by a Gauda family who lives in Kerala side. So it's a distinct Karnataka style architecture which is there. But this temple certainly seems to have been attacked. There are information that it was also attacked by the Tipu Sultan's invading army as well. But important part is the legend of Ramayana still lives on so many kilometers away from Ayodhya, and the legend that Lava and Kusha lived in the forests of Wayanad still remains, because these are some of the grand icons that reminds of the history of the place. Long years back, Rama held a Ashwamedha Yagam, and
the asham comes here and caught the asham from by Levan and Kusha. That is the important of Kudira code, which the name called as Kudira code, horse place, horse held place. That is why we are calling Kudira code. Now the time the temple is not working as a temple. There is no chance to renovate because the forest department strictly denies the area. So and also there is no a huge population. There is no humans there or colony or otherwise other thing. Only once in a year they are held a puja for Kali Shri. That is the Gauda team. They were calling only the Kali Shri. We hope you enjoyed watching these reports coming in from different parts of the country. We promise to get you more such reports in the coming few days. That's all that we could pack in this edition of This Is Exclusive. On the other side, news and updates continue. पता है ये लंबी सी मेट्रो लाइन क्यों बनी? सिर्फ इसलिए कि पापा जल्दी घर पर आए और ये दोनों उनकी गोदी में छलांग मार पाए। कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया ताकि पूर्णी चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। और हमारे जवानों के कदम कभी न रुके, सिर्फ इसीलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं कि इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। Amity faculty have filed over 2100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। PC Chandra Jewelers presents Diamond Utsav. Get 10% discount on diamond value. ₹100 off on every gram of 18 karat gold jewelry. A short gift on purchase of every diamond jewelry. Offer valid till 4th February 2024. Exchange free jewelry insurance and EMI available. Conditions apply. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना। वर्ष 2020 से देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई गरीब अब भूखा नहीं रहेगा। अब अगले 5 वर्षों यानी 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से हर लाभार्थी को मिलेगा मुफ्त राशन। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। Just another tycoon, hustling way too early in the morning, passing on this happy tune, helping babies feel at ease. Aww, all kinds of babies. No drive is just another drive when you're in a tycoon. Volkswagen.
इंस्पायर होता है हर एक किस्सा। इको रिट्रीट ओडिशा। भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। देख, इत्तू सी है, थाली तो अनलिमिटेड होनी चाहिए। कैंटीन की थाली है, कोई नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी है। मतलब इत्तू भी क्लेम किया तो पूरा बेस कवरेज वापस, अनलिमिटेड टाइम। ये तो मुझे भी चाहिए। जिंदगी को क्लेम कर ले। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। Ram Lalla's idol installed inside sanctum sanctorum today. All eyes on the grand Pran Prashishtha now. But India goes all out to mar India's big moment. Stalin Jr. provokes with mosque demolition remark. Akhilesh Yadav's leader insults Ram Bhakt, says Karsevaks fired upon to protect Constitution. Congress leader fearmongers with Kaliyug remark. Karnataka unit breaks ranks, says will visit Mandir. लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। कोई नहीं, ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। Under lens for Liquorgate, Kejriwal skips ED summons again. BJP hits out, asks, what's he hiding? Good evening and welcome, friends. With 4 days to go for the mega Ram Mandir Pran Prashishtha in Ayodhya Dham, the city is all decked up. India is awaiting the big moment with such anticipation. But the opposition, on the other hand, is going all out to vitiate the big moment. AIMIM chief Asaduddin Owaisi has now hit out at the BJP, saying Eid holiday was cancelled by the party. Akhilesh's party has now insulted Ram Bhakt again, while Sonia's Congress has now provoked with Kaliyug remark. Stalin Jr. has now raised the mosque demolition. And the big question remains, why is India going all out to berate Ram Bhakts? Even as the politics continue to rage on. With the largest team of reporters, Republic is leading the coverage as the nation gears up for the biggest moment in India's civilizational history. While we will come back with those Congress and other opposition party comments with the debate later in the evening, for now, we go to the ground to Ayodhya Dham, where Priyanka is reporting live with a lot of ground reports and some live action. Over to Priyanka in Ayodhya. The entire nation is awaiting the 22nd of January, a very special moment. In fact, we're trying to capture with our cameras from where we are standing right now. In Ayodhya, in fact, this is the beginning of the Chappan Bhog that will be made for the 22nd of January, after which it will, in fact, as a prasad, will also be distributed in the rest of the country. Let's take our viewers through as to what exactly is going to be made here, because you can see that the puja, in fact, of these particular vessels had also just been carried out. You can see buckets full of ghee that is kept here, and along with that flour as well, there are laddus being made as we speak. That is the first part that is going to be made. The cooks, the halwai as we call it, are in fact hard at work. We will try to speak to some of the officials here to help us understand better as to how exactly all of this prasad is also going to be made and how it is going to be distributed in the rest of the country as well. So because as of now we are looking at laddus. Sir, हम देख रहे हैं कि बनाए जा रहे हैं, हलवाई लोग सब काम कर रहे हैं, पूजा अर्चना हो चुकी है, ये जो उनके बर्तन है उनकी पूजा भी हो चुकी है. थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ बनने वाला है छप्पन भोग में, क्या कुछ प्रसाद की तरह बने.
देखिए अभी यहाँ पर हमारे ये जो कि भोग स्टार्ट हो रहा है बनना, उसमें यहाँ पर बूंदी प्रसाद बन रहा है। ये पूरे देश में वितरित होगा और इसकी 3 से 4 हफ्ते की लाइफ होगी, जिससे पूरे देश में आसानी से चला जाए और सभी राम भक्तों को मिल जाए। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग हमारे जो स्थान है वहाँ पर 56 भोग बन रहे हैं और उसमें क्या है कि सभी लोग अपने प्राण से लगे हुए हैं भव्यता और दिव्यता के साथ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। तो जो सारे भोग बन रहे हैं वो भी बहुत दिव्य और भव्य बन रहे हैं, जिससे कि वो सभी की फीलिंग्स उसमें ऐड हो सकें और पूरे देश में जो राम भक्त हैं, राम को मानने वाले हैं, सीताराम सरकार के फॉलोअर हैं, उसमें वो सब अच्छा रहे। इसके लिए अभी श्री राम जी की ननिहाल जो दंड कारण में है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा का जो क्षेत्र है, वहाँ से भी कुछ सामान आया है और जनकपुर और सीतामढ़ी जो माँ सीता का माँ भूमिजा जिनको हम कहते हैं, धरती पुत्री, उनके मायके से भी कुछ सामान आया है। कहीं से मेवा आ रही है, कहीं से घी आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है। तो ऐसे करके संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ हो रहा है और विश्व के अनेक देशों से भी लोगों ने अपना सहयोग किया है। उन सब जो कुछ लोगों ने अपनी भावनाओं से जो अयोध्या में लेकर आए थे, उसका भी अब इसमें उपयोग हो रहा है। जो 56 भोग बनाया जाएगा और ये 22 जनवरी को लोगों को दिया जाएगा और उसके बाद भी भेजा जाएगा, उसमें क्या कुछ बनेगा? और ऐसा है, जो भी कुछ बन रहा है वो सब प्रभु की इच्छा और कृपा से है। उसमें हम लोग तो एक माध्यम है और वो जो प्रभु चाहेंगे वो सारी चीज़ें बनेंगी। अभी क्या है, क्या क्या बन रहा है, ये राम जी की कृपा है। वो जो जब वितरित होगा तो सारा देश देखेगा कि क्या क्या चीज़ें बनी है और क्या भोग प्रभु को अर्पित हुआ और क्या वितरित हुआ। इस वक्त यहाँ पे खाली अभी लड्डू बनाए जा रहे हैं? जी, यहाँ ये भोग बन रहा है और बाकी जगह पर और भी चीज़ें हैं। So you can see, Shivangi, you know how essentially the preparation is going on, because this is the first beginning of, in fact, the prasad that is going to be given to the devotees from 22nd of January, after which will be distributed in the rest of the country. That has now begun, and in fact there was a puja that was carried out of all of the vessels, and now the cooks and the halwai in fact are hard at work. They're making the prasad that will be distributed not just to the devotees who will be able to be in Ayodhya on 22nd, but also in the rest of the country. All right, that was a ground report by Priyanka, but in fact she's joining us live from Ayodhya Dham, and let's go straight to her. Priyanka, feverish festive spirit building up. Where you are, please tell us what's really happening around you. I can see some activity in your backdrop, and please give us a lowdown of what's going to happen over the next 24 hours. Abhishek, we are reporting from the Lata Mangeshkar Chowk, and I'd like to pan our cameras and show our viewers a complete 360 view of what's really happening here, because it feels like a celebration. It feels like a festival over here, as we are looking at people from across across the country who are pouring in. Now, a very interesting thing that's happening right beside me, in fact, because we are looking at these several stories of people who have come to Ayodhya from across the country. One such person, in fact, is also joining us, who has cycled his way from Delhi to Ayodhya, and he is in fact doing an aarti. Let's show you the visuals of his entire cycle first. That helps us understand how essentially he has made that journey. This, of course, are the posters of Lord Ram and Mata Sita, and of course we also have some political posters here of the Prime Minister Narendra Modi, of JP Nadda, and interestingly he is doing an aarti of this entire vehicle right now. And that essentially is something that's happening everywhere, in every other corner of this entire city that we are looking at. Several such stories, Abhishek, of people pouring in, and this essentially shows the kind of faith that people have, because of which they are doing these kind of things. They have crossed the journey over thousands of kilometers, and they are in fact coming to Ayodhya. आप बताइए, ये क्या आपका वाहन आप लेकर आए हैं, किस तरह से साइकिल चलाकर आए हैं, कहाँ से आए हैं, और ये सारा जो आपने लगाए हैं पोस्टर्स, डेकोरेशन, पूरा हमारे दर्शकों को? मेरा नाम हुआ रतन रंजन और दिल्ली से अयोध्या साइकिल चलाते आया हूँ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। और ये साइकिल यात्रा कार सेवकों के सम्मान में है, जो हमारे कार सेवक, देवतुल्य कार सेवक, पूजनीय कार सेवक, जिन्होंने अपना जो है कि बलिदान दिया, जिन्होंने जान गंवाई राम मंदिर के संघर्ष में, जो जेल गए, आज मैं उनके सम्मान में जो है कि
उनका आरती उतार रहा हूँ। ये देखिए कोठारी बंधु अच्छा, है। ये सारे कार सेवक की फोटोज आए तो आज उनके सम्मान में उनका आरती उतार रहा हूँ। और कार सेवकों में सबसे अहम भूमिका मोदी जी की रही है। देखिए सबसे आगे मोदी जी जो है कार सेवकों का मनोबल बढ़ाते हुए आगे चलते थे। तो मोदी जी का जो योगदान है वो राम मंदिर में भी सराहनीय है और भारत की मजबूती के लिए और भारत के नवनिर्माण में भी मोदी जी का योगदान सराहनीय है। तो आज हम मोदी जी का भी आरती उतार रहे हैं कि आज कलयुग में प्रभु श्री राम मोदी जी के रूप में जो है कि इस धरती पे है, क्योंकि मोदी जी के विचार और प्रभु श्री राम के विचार जो है देश हित में और हमेशा इन्होंने प्रजा के भलाई के लिए काम किया है। तो हम तमाम देशवासी खुशी से ये भी दूसरा मैं देख रही हूँ कटआउट है, ये किस चीज का है? ये देखिए उस समय की अयोध्या कह रही थी चीख चीख के कि मैं अयोध्या हूँ, मैं अयोध्या हूँ। आज की जो अयोध्या की स्थिति है ऐसा लग रहा है कि अयोध्या स्वर्ग है, स्वर्ग से भी सुंदर आज अयोध्या सजा हुआ है। तो ये कार सेवकों का जो है कि पूरा संघर्ष, हमारा जो विरासत सनातन का जो है मान सम्मान, प्रभु श्री राम का जो है कि राम मंदिर भव्य बन के तैयार हो गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगा। So, you know, Abhishek, to pan our cameras, I'll ask Vijay Vipin to show you, because we just showed you the pictures of the historic moments, and now we'll show you the present moment of Ayodhya right now, right here at the Lata Mangeshkar Chowk. That helps us understand how far essentially the people of Ayodhya have come, how far essentially the city of Ayodhya has come. We'll keep moving towards more and more such people, in fact, who've gathered here. You know, they have stories to tell as to where they have come from, thousands of kilometers of journey that they have also made to come to Ayodhya during the consecration ceremony. Maybe they would not be able to be here on 22nd of January, but they are trying to come in as early as possible and to be in Ayodhya as much as possible. We have another gentleman joining us here. He has an entire tempo and he's you know, also trying to show it to us. आप बताइए क्या आप यहाँ पर लेकर आए हैं, क्या पदयात्रा की है, किस तरह से पूरा सजावट करके यहाँ पे लेकर आए? सर्वप्रथम मैं अयोध्या वासियों को मेरा जय जय श्री राम। मैं विश्व हिंदू जनसत्ता बहुमत पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्तिक गेंदलाल जी डोके। पिल्ले विश्व हिंदू जनसत्ता बहुमत पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासचिव। अच्छा, और ये क्या आप यहाँ पर लेकर आए हैं, पूरा डेकोरेशन करके लेकर आए हैं? आगे 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 बताते हैं, इधर आइए। ये है हमारा नागपुर से अयोध्या पैदल यात्रा विश्व हिंदू जनसत्ता बहुमत पार्टी की ओर से। हम लोगों ने 2011 में 2 मार्च 2011 में शिवरात्रि के दिन नागपुर से राम जन्मभूमि अयोध्या तक पैदल यात्रा किया था। उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य था जो 550 सालों से जो राम जन्मभूमि अयोध्या का मुद्दे पे जो राजनीति जो चल रही। Absolutely, the Rajniti is another point. You know, Abhishek, we will keep coming back to these stories as more and more people pouring into Ayodhya from across the country, and each of them have a very interesting story to share with us. And of course, we will share all of those with our viewers. Right now, slipping into a very short break. Don't go anywhere. कहाँ हो तुम किम? कैसी लगी हमारी एंट्री? अल्टीमेट। स्विच। कुर्सी की पेटी बंदी है ना, मौसम बिगड़ने वाला है। और अब क्लाइमैक्स। The new Hyundai Creta. Undisputed. Ultimate. आपने सोमानी का नया रोल देखा? वही स्टाइल और रेंज सोमानी बाथवेयर में भी। सोमानी बाथवेयर। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत। बादलों पे चल के हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा। उम्मीदों के पंख कंधों पे लगा के मैं बनाऊंगा। बनाऊंगा मैं तो बनेगा
स्किल, स्टील और दिल से बन रहा है भारत। AMNS India, smarter steels, brighter futures. Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नूं टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा, भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। बिजली दे बिल तो जमा ही मैनू 1.5 साल हो गया, जमा जीरो आ रहा मेरा। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਨੇ। मेरे ते यकीन तुसी कीता तो यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। All right, we are moving out a bit from Ayodhya for a breaking news development still connected with the opposition politics, and that's Samajwadi Party and the Congress. The fighting continues, or infighting continues, over seat-sharing talks. The SP leader, Ram Yadav, has said that the party will contest on 80 seats with Congress. Now the catch is, how many seats does the Congress get? Because sources told reporters yesterday that Congress wants to contest on 80 seats and the Samajwadi Party thinks that's little ambitious. We'll try and connect with a reporter on the ground for this breaking news development, which means jousting for number of seats continues in the indie space. And let's see if we are getting a report. Okay, let's listen to first what Ram Yadav has said, and then we come back for a reporter live. अब मंजिल दूर नहीं। कितनी सीटें सर कितनी का दोनों मिलके 80 पे लड़ेंगे। कब तक फैसला होगा कितनी दिन किसी क्षण कभी दूर नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन सपा कितने पे लड़ेगी? दोनों मिलके 80 सीटों पर लड़ेंगे। अब मंजिल दूर नहीं। कितनी सीटें सर कितनी का दोनों मिलके 80 पे लड़ेंगे। कब तक फैसला होगा कितनी दिन किसी क्षण कभी दूर नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन सपा कितने पे लड़ेगी? दोनों मिलके 80 सीटों पर लड़ेंगे। Well, viewers, we are bringing you each and every voice and each and every story of people who are pouring into Ayodhya. We are reporting from Ayodhya, a nook and cranny of Ayodhya being covered by us, bringing you each and every flavor and the kind of celebration that the entire city is in the mood for as and when the 22nd approaches. Don't go anywhere, we'll be back after a very short break.
Amity faculty have filed over 2,100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नूं टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा, भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। बिजली ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना। वर्ष 2020 से देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई गरीब अब भूखा नहीं रहेगा। अब अगले 5 वर्षों यानी 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से हर लाभार्थी को मिलेगा मुफ्त राशन। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। जहाँ यादगार होता है हर एक किस्सा, इको रिट्रीट ओडिशा। आपने सोमानी का नया रोल देखा? वही स्टाइल और रेंज सोमानी बाथवेयर में भी। सोमानी बाथवेयर। PC Chandra Jewelers presents Diamond Utsav. Get 10% discount on diamond value. ₹100 off on every gram of 18-karat gold jewelry. A short gift on purchase of every diamond jewelry. Offer valid till 4th February 2024. Exchange-free jewelry insurance and EMI available. Conditions apply. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. Welcome back. Prime Minister Narendra Modi unveiled commemorative postage stamps ahead of the auspicious inauguration of the Ram Janmabhoomi temple set to take place on 22nd of January in Ayodhya Dham. Books of these 6 stamps have been issued around the world. Take a look at this detailed report. इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है, कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगलहारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से
राष्ट्र के मंगल की कामना है। इनमें सूर्यवंशी राम के प्रतीक सूर्य की छवि है, जो देश में नए प्रकाश का संदेश भी देता है। इनमें पुण्य नदी सरयू का चित्र भी है, जो राम के आशीर्वाद से देश को सदैव गतिमान रहने का संकेत करती है। मंदिर के आंतरिक वास्तु के सौंदर्य को बड़ी बारीकी से इन डाक टिकटों पर प्रिंट किया गया है। कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया, ताकि पूर्णी चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। वो काम ही कैसा काम जिसकी खोज किसी को अपनों से दूर ले जाए। सिर्फ इसलिए रंजीत के शहर में भी एक ऑफिस बना है, और हमारे जवानों के कदम कभी न रुके। सिर्फ इसलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं, इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। बादलों पे चल के हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा, हौसलों को कस के तूफानों से लड़के मैं बनाऊंगा, बनाऊंगा मैं। स्किल, स्टील और दिल से बन रहा है भारत। AMNS इंडिया, स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में PM श्री स्कूलों के 404 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले आधुनिकीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में उन्होंने लागू करते हुए 2020 में पूरे देश को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा दी, और उसी श्रृंखला का हिस्सा है PM श्री स्कूल की ये योजना। इसके साथ ही प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक विद्यालयों में सुविधाओं के लिए 347 करोड़ की धनराशि भी हस्तांतरित की गई। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार की इस योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 5 करोड़ बच्चों को होगा। पुलाची जाना था, अगली बस कब है? गुरुजी, सालों के बाद देख रहा हूँ तुमको। आप पोलाची जा रहे हो ना? चलिए आपको ट्रक से छोड़ देंगे। अब ट्रक में सफर करना मुश्किल है। हमारा नया टाटा सिग्ना घर जैसा आरामदायक है। टाटा मोटर्स ने बड़ी लगन और समझ से बनाया है एक नया सिग्ना कैबिन, जो आपके सेफ्टी, स्टोरेज और कंफर्ट की जरूरतों को पूरा करे। अब ड्राइवर प्रोडक्टिविटी होगी और भी ज्यादा। टाटा ट्रक्स, देश के ट्रक्स। भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। सर मेंबरशिप होगा, पर मैंने तो यूज भी नहीं की। फिर तो वेस्ट हो गई। कैरी फॉरवर्ड कर दो। ऐसा कहाँ होता है? मेरी नीवा भोपाल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। मतलब It lets me carry forward my unutilized base coverage to the next year. कि मुझे भी चाहिए। जिंदगी को क्लेम कर ले। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत।
Gurudev, are the Muslims a part of this celebration? We are just days away from the Pran Prashishtha of the Bhavya Ram Mandir. Have Muslims actually accepted the reality? What is your sense of the Muslim community? Are they truly part of this celebration, or is there a feeling of angst inside them about the Ram temple? As far as I know, today there is very good feelings even among the Muslims. I don't see there is any such bickering. When I went and met about 1,200 imams and other religious leaders throughout the country during the mediation time, I tell you, except 2 or 3, everyone was willing to be part of it. Everyone was willing for a peaceful and happy settlement. Nobody wants to carry this on further anymore. And many of them have written, they're given in writing that they are ready to be part of peaceful settlement. Yeah. Biggest story tonight, powered by Century Club Prime. It's 4 days away for the big moment that the entire country has been waiting for decades. It's a moment that the Prime Minister says is going to unite the country like never before. It's also a moment that the Prime Minister says has a message of peace and oneness, togetherness, like he says. But then, how can we not talk and focus also on the good amount of politics, especially by those who continue to call themselves quote-unquote Ram Bhaks? But then, Akhilesh's uncle, Shivpal, is also justifying what happened on the Karsevaks, the firing. And he says that was well within the constitution. We'll unravel that entire story in just a moment. Also, as always, we'll get you live coverage from Ayodhya with our team tracking that story closely. First up, the headlines, as always. Ram Lalla's idol installed inside the sanctum sanctorum today. All eyes now on the grand Pran Prashishtha. But the India alliance is going all out to mar India's big moment. Stalin Jr. provokes with a quote-unquote mosque demolition remark. Akhilesh Yadav's uncle is insulting Ram Bhaks. He also now says Karsevaks fired upon to protect the constitution. Congress leader fearmongers with a Kalyug remark. Karnataka unit breaks ranks. It says will be visiting the Ram Mandir. Under lens for Liquorgate, Arvind Kejriwal has skipped the enforcement directorate summons yet again. The BJP hits out. They ask, what is he even hiding? After Iran's missile attack on Balochistan, Pakistan keeps the troops on standby now. Evacuation orders have also been put in place. So how is Ayodhya decking up for the big day? There are reports that multiple people, devotees in huge numbers, all want to be a part of the big consecration. Now, do remember that what's going to happen on the 22nd, that is this Monday, with the Pran Prashishtha, possibly could not accommodate so many people. So the administration is also trying to put up large LED screens in and around Ayodhya to ensure that all the Ram Bhaks who are heading right now to the holy city that has turned spectacular, and also more so by the evening, they are able to see and get a darshan of Ram Lalla. So we thought, why to miss the opportunity? We have our best teams tracking that story on ground zero. Let me introduce both Priyanka and Rakshita, who've been traveling the length and breadth of Ayodhya, meeting number of people, getting you stories that are stories not just of devotion, of fervor, but also stories of celebration. People who've been waiting for years together, today having a sighing of relief, and today believing that this is the moment that they all have been waiting for. Now, I do know Rakshita is at the Saryu Ghat and a lot of people and a lot of preparations behind her. Rakshita,
But before I come to you, I want to take it across to Priyanka, who's at the Lata Mangeshkar Chowk, and it's a beautiful chowk, you know. Priyanka, from where you're reporting, the chowk itself has so much of history to talk about. Now, because both of you ladies are, you know, those who've been picked up by Ram Lalla to be a part of this grand consecration, like I always say, Priyanka, why don't you tell us what has happened through the day today? What is expected? This is day 2 of all the ceremonies that have begun. The idol of Lord Lalla has now been installed inside the sanctum sanctorum. Give me a sense, Priyanka, first up, of what we've seen through the day. Well, yes, Deepthi, you know, it always brings a smile to our faces when you say that. But, you know, we'll try to give you a sense of where we are right now, because we are trying to show you the Ayodhya of today. And this is the Lata Mangeshkar Chowk, as you really very rightly pointed out, one of the most beautiful and the iconic parts of the city. And look at the number of people here. It looks like there is a celebration already that is going on. It looks like there is a festival that is already going on. And there are, as you pointed out, you know, the stories of the people who are going to, in fact, you know, who have been pouring into Ayodhya from the nook and crannies of the country, because they probably would not be able to be inside on the 22nd of January, but are trying to soak up as much as they can of Ayodhya, as we see around us as well in the entire Lata Mangeshkar Chowk. Hundreds of people have come out. They are just out with their family members. They are just out and outside of the darshan as well. In fact, this is the road that leads towards the temple, and that is why we also see a lot of movement of the devotees as well. So this is a very busy chowk, a hustling and bustling chowk as well, and not just of vehicles of people who are commuting to and fro from work to home or to the temple, but also vehicles like this one that you see here, Deepthi, vehicles like this one that have come not from Ayodhya but from Nagpur, from length and breadth of the country, in fact. And these are people who have come from a Padyatra. They have also, you know, walked alongside of this entire vehicle. You can see how beautifully, in fact, this has also been lit up, and the poster of Ram Lalla that is also put up there. आप बताइए, आप लोग कितना किलोमीटर चलकर आए हैं, कितने लोग आए हैं, किस मतलब से आए हैं? अयोध्या में पूरा जश्न मन रहा है, क्या 22 जनवरी की उत्सुकता के लिए आए? वही आपको बता रहे हैं कि जो हम लोगों ने 2011 में राम जन्मभूमि अयोध्या पे मंदिर बनना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने नागपुर से राम जन्मभूमि अयोध्या तक पद यात्रा की थी। उस समय हमारी तारीख थी 2 मार्च 2011 से लेके 14 अप्रैल 2011 तक। उस वक्त रामनवमी का दिन था। उस वक्त हम लोगों ने नागपुर से अयोध्या पैदल यात्रा आए थे। उस समय हमारा मेन उद्देश्य था कि 550 साल पुराना जो भगवान का मंदिर नहीं बन रहा था वो बनना चाहिए। इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि सभी पार्टियां उस समय राजनीति केवल राजनीति मंदिर का मुद्दा बना के राजनीति कर रहे थे। तो हम लोगों ने उस समय सोचे कि हम लोगों को हमारे माँ बाप ने जन्म दिया है, यदि हम अपने जीवन में भगवान राम के मंदिर के लिए कुछ नहीं कर पाए तो हमारा जीवन, क्योंकि आपने राजनीति का मुद्दा छेड़ा तो मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी, क्योंकि हम आज पूरे दिन ये ट्रैक कर रहे थे कि किस तरह से जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनके लीडर्स हैं, उनके नेता हैं, वो कई सारे बयानबाजी दे रहे थे। और अभी भी हम देख रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक रोटियां जिस तरह से कहते हैं उसको सेका जा रहा है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि एक जो नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये भी जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि कर सेवकों के ऊपर जो गोली चलाई थी वो जस्टिफाइड था, वो संविधान के लिए, संविधान को बचाने के लिए? नहीं, देखिए अभी तो मेरा वो मुद्दा नहीं है। अभी पहले मैं अपना मुद्दा बताऊंगा, क्योंकि मैं यदि उनके मुद्दे पे अगर बात करूं तो आप मेरी जो 2011 की जो यात्रा है उसके बारे में आप नहीं बता पाऊंगी। इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। पहले मेरी जो यात्रा है उसको सुनो। उस समय हम लोगों ने मंदिर बनना चाहिए, जो 550 सालों से मंदिर नहीं बन रहा था, मंदिर बनना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने अपने धर्म के लिए नागपुर से अयोध्या पैदल यात्रा किया था। उस समय जब हम लोग सरयू में 14 तारीख को आए थे, रामनवमी के दिन, उस समय हम लोगों ने माँ सरयू में स्नान करके अपनी सिखा संकल्प बढ़ाए थे। उस समय निर्मोही अखाड़े के जो महंत थे, भास्कर दास महाराज, जगन्नाथ महाराज और रामदास महाराज, और यहाँ के जो सरपंच थे अयोध्या के, भास्कर दास जी, यह सब साक्षी थे। और उस समय हम लोग जब भगवान राम ट्रेन में थे, वो ट्रेन में हम लोग गए
तो हमने So, you know, that is essentially the story. You know, thank you for sharing it, because, you know, this is essentially how this vehicle has been lit up. And, you know, just like him responding to not my political question, that is essentially the demeanor of all of the people of Ayodhya, who are completely, you know, rejecting these statements, are insulated from that statement, sometimes give them a casual disregard for this statement as well, claiming that this is not a point for politicization, this is not a time for politicization. In fact, this is a time for festivals and a time for celebration. A second Diwali is what the people of Ayodhya are calling it. आप बताइए किस तरह से आप ये पूरा माहौल देख रहे हैं अयोध्या का? लता मंगेशकर चौक पे हम खड़े हैं, दूसरी दिवाली हम देख रहे हैं कि हम अयोध्या वासी कह रहे हैं कि दूसरी दिवाली मनाई जा रही है 22। मैम श्योर दूसरी दिवाली ही मनाई जा रही है मैम। एक बार राम आए थे और आज जो है मोदी और योगी जी के कर्तव्य कारण जो है फिर से हम लोग ये दूसरी दिवाली मनाने जा रहे हैं। दिवाली है नहीं, लेकिन दिवाली हम लोग मना रहे हैं पूरा अयोध्या वासी। और मैं गोरखपुर जनपद का हूँ। धन्यवाद है योगी आदित्यनाथ जी महाराज को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये जो हम लोग को अयोध्या, जो हम लोग 500 वर्षों से जो है अयोध्या का दर्शन नहीं कर पाए थे, आज उन्हीं के द्वारा ये सब संभव हो पाया है। जी आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, और किस तरह से आप लोग भी देख रहे हैं कि ये जो बातें हो रही हैं, जो राजनीति हो रही है, उसको भी किस तरह से देखते हैं कि कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का इवेंट है, कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल इवेंट है, काफी लोगों को न्योता मिला है, वो न्योता ठुकरा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर युग में रावण रहे हैं, हर युग में कंस रहे हैं। बिना रावण के और बिना कंस के भगवान को यहाँ आने की आवश्यकता ही न पड़ती। तो हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जो विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं, जो राम का विरोध करते हैं, जिनके कारण हमारे बीच में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आ रहे हैं। हम उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। और अयोध्या की जो ये छटा है, अयोध्या की जो अलौकिक दृश्य है, इसको देखकर ऐसा लग रहा है न भूतो न भविष्यति, न ऐसा कभी इतना सुंदर अयोध्या थी और न आगे ऐसा सपने में सोचा जा सकता है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को और योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देते हैं इतनी सुंदर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इस भव्य उत्सव के लिए जो है। So, you know, that essentially is the sentiment here on the ground, Deepthi. Once again, very quickly, we would like to pan our cameras and show the decorations that are going on here, the decorations that have been put up, and essentially each and every tree that has been lit up with very beautiful twinkling lights. And this all really does look like a second Diwali that is being celebrated. And this is the main road, mind you, the main, a very hustling and bustling chowk, that is Lata Mangeshkar Chowk, a very busy street, so to speak. But even then, it is able to accommodate hundreds of people who are bearing the flags of Lord Ram, who have just come out to take pictures with their family members. And, you know, they are in fact come from across the country as well. And very quickly, before I toss it back to you, Deepthi, you know, this is in fact the entire Ram Path as well, where we are able to show our viewers how the Surya Stambh has also been lit up. And this essentially shows how exactly, you know, the celebration of the 22nd of January is going on. That is the Ram Path that we are showing, the Dharm Path that we are showing, I beg your pardon. And we have the Surya Stambh that has been lit up, this entire area. So this essentially shows us and helps us understand how Ayodhya has been lit up and how Ayodhya is in fact also celebrating a second Diwali, as the Prime Minister had also said to them on 30th of December when he had inaugurated thousands of crores of projects. And this is now people waiting for the 22nd of January, completely insulated from the political statements. Back to you, Deepthi. Oh yes, and you know Priyanka, like one of the gentlemen that you spoke to initially said, वो सब तो बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरी कहानी सुने. So I think that's exactly the kind of sentiment that a lot of people there on ground will have to say, because this is a moment that only and only belongs to Lord Ram. I want to see if we can get Rakshita back with us on the screens. She is also reporting, remember, just outside the Saryu Ghat. I do not see her yet on the screen, but I'll attempt to ask her a question in the hope that she can hear us. Otherwise, Priyanka, I'm going to come back to you. Rakshita, you know, a trip to Ayodhya is never complete without the delicacies, the food. And this time around, I'm given to understand that there are special pakwans being made, there are special laddus being made, there are special gifts that already have arrived for the big day, Rakshita. So have you tasted anything? Have you seen anything? Are you feeling that in the air? I mean, what all is going on? Saryu Ghat is all well lit up.
Well, of course, just a while back we also saw the Aarti was also happening, and right now we're waiting for the light show that is going to start. Earlier we had some fountains lit up here while Priyanka was speaking. We missed out on that. There was some beautiful lightings also happening. We missed out on that as well, but we are waiting for another music and light show. Let's see when that happens. But in the meantime, you can see it's completely a devotional, devotional mood here. You can see Hanuman Chalisa being recited here right now by the people, the bhaks here. I request my camera person to pan the camera and show the Hanuman Chalisa being recited here, and many other Ram bhajans are also being recited here. See, the light show has started. Right behind me is the light show. You can see that is the famous light show of Deepti that happens every evening. And ever since, I don't know if you can hear me, but every evening since Diwali 2023, this is happening, I'm told, every day. It's a main attraction on Saryu, a main attraction at Ram Ki Paidi every evening, attracting thousands of tourists, as we are seeing right now on our screens. You can witness this live on your screens. At now behind me are the lightings, and there will be various hymns, bhajans of Ram Lalla, and there will be sound. The tunes will be based on the music, and the lighting is based on that sound. So you can see right now on your screens is the beautiful, beautiful music, the sound and light show. Oh yes, Rakshita. So you know what we'll do is we'll keep our cameras focused there. Let our viewers soak in that entire moment right now. That's the long Saryu Ghat there. That is not just very, very clean, spick and span right now, but also very well lit up. And this is much like that laser show that has been prepared there. And I'm given to understand, Rakshita, that fables from the Ramayana and little stories from the Ramayana are also depicted there. That's also a part of the laser, show that is underway right now. So why don't you describe to us more about what you're seeing all around you right now? मुझे आवाज नहीं आ रही है. हेलो, बोलो बोलो शरद. आवाज नहीं आ रही. Alright, we can see right now on your screens is the light show and a lot of excitement here. Sir, काफी excitement है जो बढ़ती जा रही है और आप लोग डांस भी कर रहे हैं. इस वक्त हम देख रहे हैं डांस भी कर रहे हैं और गाने भी गा रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं. ये राममय वातावरण है. राम हमारे आराध्य लौट कर आ रहे हैं 500 साल बाद में. श्री राम with the hymns that are being recited, I request my camera person to please show the lighting that is going on, the beautiful lighting that is going on right now, the sound and light show live on Republic TV. You can see this is the main attraction there, and Jai Shri Ram and some more bhajans, viewers. Some more bhajans will be happening right now, and accordingly we'll see the colors changing and the vibrancy, the beauty of this place right now on your screens. And as we speak, there are thousands of people that have gathered here at the Saryu Ghat on the Ram Ki Paidi, and there are many more people, young and old, that are gathering here as
this show has just begun, and it will go on for around a half an hour at least, or a bit less. But this is a tourist attraction for many people. People from across the country come to Ayodhya, and now after Ram Temple consecration, we expect that there will be a surge in the number of tourists, not just from across the country, but also from across the world. We see in this chilly weather also there are so many people, viewers, that have gathered up here. They are dancing, they are chanting Hanuman Chalisa, they are chanting mantras also. It's a beautiful scenario here. I can only speak and show you, but actually to feel it, you have to be here. And as Deepthi rightly points out, that maybe me and Priyanka are the chosen one. And there are, of course, many other people from our network who have been chosen for this extensive coverage, this exclusive coverage that Republic TV is getting to millions of our viewers, and in several languages across platforms. Republic TV viewers, we are getting you the live images right now from the Saryu Ghat, from Ram Ki Pedi right now. And beautiful Ram bhajans right now being played. You can see beautiful Ram bhajans being played, and people are ecstatic. The atmosphere is electrifying, and you can see around me it's a lot of lighting, a lot of youngsters are having fun, and they are of course just show around. I request Ranveer to just show around the sprawling facade of this temple that's right across Ram Ki Pedi, and it's a beautiful scene out here. This light show is so well coordinated, and we see the use of technology being employed. It is very well conducted every day. There are artists who are behind this, and a lot of creativity that gets employed. Before that, we saw Ram Katha also that was shown on a screen. Various scenes from Ramayana, and also from Krishna's story we were seeing a little story from the life of Krishna also that was depicted here at the screen, which is now replaced by this beautiful light show. And Jai Shri Ram chants, as we were showing you yesterday, and these are getting louder and louder as the consecration ceremony is only coming nearer. Viewers, the Jai Shri Ram chants are getting louder and louder. We are seeing this every day. In fact, as each hour passes, this chanting is going louder. It's only growing louder, and we can see people are dancing also right now in Jai Shri Ram, and they're enjoying, and also they're chanting, and the mood is entirely celebratory. I think we call it Diwali. This is another Diwali, but I think even the Diwali which we celebrate traditionally, we do not see such scenes. This is bigger than any Diwali, in what I'm seeing right now around me. So it's it's very electrifying, and this of course is magnanimous. What is happening to the right side of me, the beautiful light show, all the colors. This is the vibrant colors of a culture, vibrant colors of the culture and the tradition, the rich heritage of the country, all at one place. Sipping to a very short break, viewers. We will continue our live coverage from Ground Zero in Ayodhya. Biggest coverage only on Republic TV. Stay tuned. Powered by Century Ply Club Prime. रहो बेफिक्र। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। Amity faculty have filed over 2100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements.
Kia, movement that inspires. भाई इतनी बड़ी टाइल। इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। I did something called Pirate Radio, and I remember the craziest thing happened. One day, this RJ Mihir tagged Imran Khan, the actor, saying, if you like English music, you love Malini's nighttime show, and he tagged me. And at that point, my name was Miss Malini because of the blog. This is before the empire, okay? And I said as a joke, haha, Imran Khan would love for you to come host the show with me. And look at the power of social media. Imran Khan replied to that tweet, which is like 140 characters, saying, I'll do it on one condition. If we call it Pirate Radio, and I can play what I want. And I remember staring at my screen, thinking, did he just reply to me? I knew that rush of a celebrity replying then, and I was like, I'll do whatever. I didn't even ask the program director. I said, done. Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2 करोड़ 26 लाख लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। औलाद साम बन के चिंगारियों में पल के मैं बनाऊंगा, उम्मीदों के पंख कंधों पे लगा के मैं बनाऊंगा मैं तो। स्किल, स्टील और दिल से बन रहा है भारत। AMNS इंडिया, स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। I want to soar above the skies and fulfill my responsibilities. With LIC. Paid your LIC premium? On time. दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC, हर पल आपके साथ। उड़े देश का आम आदमी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन ने रीजनल एंड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य। भगवान बुद्ध की तपोभूमि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के 25 महीने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का संचालन। जब नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है, इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश के एविएशन मैप के शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। एयरपोर्ट से ऊंची उड़ान, कनेक्टिविटी को नई पहचान। टिप चाहिए? पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ। डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा और मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ? सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र।
it's time for Superfast 50. I'm Shivangi Shakra. Let's get started. The city of Ayodhya is being decked with flowers ahead of the Pran Prashishtha ceremony of Ram Temple. Remember, the inauguration ceremony of the Ram Janmabhoomi temple is set to take place on 22nd January. Central government announces half-day closing till 2:30 p.m. on 22nd Jan at 2024 at all central government offices, central institutions and central industrial establishments throughout India on the occasion of Ram Temple Pran Prashishtha ceremony. Prime Minister Modi releases the commemorative postage stamps on Shri Ram Janmabhoomi Mandir and a book of stamps issued on Lord Ram around the world. Components of the design include Ram Mandir, Sun, Saryu River and sculptures in and around the temple. Prime Minister Modi revealed the inside pictures of the stamp book. The stamp book is an attempt to showcase the international appeal of Lord Ram on various societies. This 48-page book covers stamps issued by more than 20 countries including US, New Zealand, Singapore, Canada, Cambodia and organizations like the UN. UP Minister J.V. Singh handed over 10,000 famous glass bangles from Firozabad inscribed with Jai Shri Ram. Written on it, the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust General Secretary Champat Rai said. Preparing of special perfume and kesar dhoop dedicated to the Shri Ram Mandir Pran Prashishtha ceremony in Ayodhya. Shri Padmanabhaswamy Temple in Kerala will be gifting a ceremonial bow today in a function as part of the consecration ceremony in Ayodhya. Indian Met Department launched a new page for Ayodhya weather forecast. The page is for the ease and convenience of the people visiting Ram Mandir. Rohasi Pramod Sawant says that the cleanliness drive in all temples of Sakhali constituency has now begun. To celebrate the auspicious inauguration of Ram Mandir, Goa government has declared a public holiday for government employees on 22nd January. Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Chief Priest Acharya Satendra Das explains in detail the rituals ahead of the Ayodhya Ram Temple Pran Prashishtha. जजमान होता है वो जजमान आचार्य का वर्णन करता है कि या जो भी आप करेंगे इस कार्य में जो करेंगे जो मंत्र जपेंगे जो कुछ भी है पूरा फल किसको मिलता है तो उसको मिलेगा जो वहाँ आचार्य वर्णन किया है तो आचार्य हमने वर्णन किया तो जो वर्णन करने वाला है उसको मिलता है. With 4 days to Ram Temple Pran Prashishtha, preparations are in full swing in UP's Ayodhya. BJP National President JP Nadda performs the cleaning service at Pashupati Nath Temple in Delhi's Vishwas Nagar after Prime Minister Modi gave a call to conduct cleanliness drives in temples ahead of the Ayodhya Ram Temple's Pran Prashishtha. The idol of Ram Lalla was brought inside the sanctorum of the Ram temple last night. The Ram idol was later placed inside the sanctorum on Thursday evening. Preparation for the hosting of thousands of devotees, including foreign invitees and guests from across the globe, Ayodhya has intensified security measures. Across the state, the commandos of UPATS has been deployed at the Lata Mangeshkar Chowk ahead of the Pran Prashishtha ceremony. As the nation anticipates at the Ayodhya Ram Mandir, the Mumbaikars are all set to celebrate the event across the city. Shivaji Park in Dadar, Mumbai has been decorated and lit up ahead of the Pran Prashishtha ceremony. As India readies for the Ayodhya Ram Mandir's grand consecration ceremony on Jan 22nd, Uttarakhand is also illuminating its streets. Images of Lord Ram have been displayed via laser light on the clock tower in Dehradun city. The chief architect of the Ram temple in Ayodhya gave details on the temple's architecture. Chandrakant Sompura said that even though the design is the same as it was earlier, 3 more mandapas have been added and its height has also been increased. The temple is based on the Nagara architectural style. Ayodhya Ram Temple Construction Committee Chairman Nripendra Mishra explained the process of the Pran Prashishtha ceremony. In fact, he's saying that this will be very special. The puja vidhi will be also held prior to the Pran Prashishtha ceremony.
Aam Aadmi Party Gujarat Chief Yesudan Gadhavi has stated that the Aam Aadmi Party's Gujarat unit has decided to organize a 3-day Ram Mandir Pran Prashishtha Mahotsav. Now, that is also they're planning to organize Sundarkand parts in all the districts of the state. Karnataka Congress MLA Krishna has stated that he is an Indian and so worshipping God is a personal opinion. Religion is not an issue for the people in Karnataka. He also stated that there is no need of permission from Congress to visit the Mandir. First of all, I am Indian. That is the main point. Worshipping God is our own, in our own interest. So there is no question of Congress, this one, that one. We worship all the gods. We participate in every community, every religion functions, whether it is Christian, Muslim or Hindu. We participate in every. Amit Kejriwal has skipped the summons today, which was issued to him by the ED in the excise policy case. BJP spokesperson Gaurav Bhatia has slammed Arvind Kejriwal for skipping his fourth summons. Bhatia says Kejriwal is the kingpin of Liquorgate and cannot run away from the law. In a setback for the Aam Aadmi Party in Polban, Haryana, its state campaign committee chairman Ashok Tanwar has quit the Aam Aadmi Party. 46 of the party workers have also left as well. Chandigarh mayoral polls have been postponed until further notice. Now, the postponement of the polls is attributed to the ill health of the presiding officer for the election. Delhi's Rao Samino Court has denied bail to accused Neelam Azad, who was arrested over the security breach in the parliament last year. External Affairs Minister S. Jaishankar, who is on a 2-day visit to Uganda, will lead the Indian delegation at the 19th summit of the non-aligned movement to be held. This will happen later on between 19th and 20th of January. Amidst the freezing temperatures in the national capital, Indian forces are practicing for the Republic Day parade. The parade rehearsals for the 75th Republic Day took place at Delhi's Kartavya Path. ED conducted raids at 7 places in Kolkata in connection with the probe into the alleged irregularities in recruitment of schools in West Bengal. A senior officer stated that the raids are being held at the residences and offices of those who allegedly acted as middlemen in the scam. Explosion took place in a Maharashtra Industrial Development Corporation plant in Thane that left at least 5 people injured. The fire tenders were rushed to the spot and shifted the injured people to the hospital. Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia unveils Air India Express Airbus A350 at the Wings India event in Hyderabad. Israeli Chief of Staff Herzi Halevi said that likelihood of a war happening in the coming months in the north of Israel is much higher than it was in the past. He said that his remarks were made as he visited a reservist exercise in northern Israel. Israeli Chief of Staff said that mostly likely that war will happen on the north of Israel in the coming months, which will be more intense than the past attacks. Israel has vowed to halt Hezbollah attacks from southern Lebanon so that the thousands of Israelis can return to their home. Israeli army claimed that rocket launchers used by terrorists in Gaza destroyed. According to the Israeli Defense Forces, approximately 25 rockets was fired towards the city of southern Israel, and the forces countered them and destroyed them. Members of Congress held a vigil on the steps of the Capitol for the roughly 100 hostages who remain in Hamas custody more than 100 days into the Israel-Hamas war. The Speaker of the House, Mike Johnson, said that the Congress will not be quiet and will stand together in solidarity with the Jewish people. World Health Organization official described Gaza's living condition as atrocious. WHO said that the increasing death rates is leading to a collapse of the healthcare system in Gaza. It added that the temporary stoppage of hostilities will not be enough for the enormous demand. Israeli Defense Minister said that the fight against Hamas will continue until victory. He also stated that they will fight with Hamas until they take away all the significant military capabilities and remove it from the power. Qatar has dispatched 2 planes carrying medicines and others aid to Gaza after mediation with Israel. The 2 planes carried 61 tons of aid, including medicine from Qatar and France.
The medicines arrived in Egypt and are on the way to Gaza. Relatives and the friends of an infant who was kidnapped during the Hamas attack on October 7 celebrated his first birthday by sending orange balloons into the sky. The balloons carried the message seeking the release of the 1-year-old child. Many Palestinians have been displaced as loss of shelter has forced the people to rush to the refugee camps. However, these refugee camps are flooded and do not have space for further accommodation. European Union called the situation in Gaza unacceptable and Israel continues its military operation against Hamas following the October 7th attacks by the group and called for a new humanitarian pause. Pakistani strikes targets deep inside Iran claims that it has hit Baluch insurgent camps situated close to the border. The attacks come a day after Iran struck Sunni terror camps located in Pakistan. Iran claims 3 women and 4 children, all of whom foreign nationals, were killed in the Pakistani strike in the eastern part of the nation in the restive Balochistan province. Iran, hitting out at Pakistan, has demanded an immediate explanation from its eastern neighbor over the strikes carried out by Pakistani military inside Iran. U.S. Central Command forces conducted strikes on 14 Iran-backed Houthi missiles that were loaded to be fired in Houthi-controlled areas in Yemen. The missiles presented an imminent threat to merchant vessels and U.S. Navy ships in the region, prompting U.S. forces to take action. Pentagon officials maintain that the U.S. military strikes against Houthis' military sites were effective. Pentagon spokesperson Major General Pat Ryder said that the strikes focused on the Houthis' command structure. The U.S. and British military forces are conducting airstrikes in Houthi-controlled regions of Yemen, targeting cities such as Hodeidah, among others. And they have been launched on urban areas in Yemen. Houthi rebels in Yemen launched missile drones targeting a U.S.-owned vessel on the Gulf of Aden. Now, the Houthis confirmed that they launched the attack in response to earlier military action by the United States and the United Kingdom. The United States has relisted Yemen's Houthi rebels as a global terrorist group in response to their relentless attack on commercial ships in the Red Sea and Gulf of Aden. The State Department said that the designation aimed at blocking money and weapons from going to Iran-backed terrorists. The prosecutor investigating the attack on the set of a public television channel last week was shot to death. The prosecutor, who had carried out other high-profile investigations in the past, was shot while driving a vehicle. South Korean and U.S. nuclear envoys met to discuss high tension in the Korean peninsula and ways to respond to North Korea's nuclear threats. The two are scheduled to meet with Japan's nuclear envoy later in the day. Powered by Century Ply Club Prime. रहो बेफिक्र। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। पता है ये लंबी सी मेट्रो लाइन क्यों बनी? सिर्फ इसलिए कि पापा जल्दी घर पर आए और ये दोनों उनकी गोदी में छलांग मार पाए। कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया ताकि पूर्णी चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। और हमारे जवानों के कदम कभी ना रुके, सिर्फ इसीलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं कि इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। Just another tycoon, hustling way too early in the morning. Passing on this happy tune. Helping babies feel at ease. Aw, all kinds of babies. No drive is just another drive when you're in a tycoon.
Volkswagen. आपने सोमानी का नया रोल देखा? वही स्टाइल और रेंज सोमानी बाथवेयर में भी। सोमानी बाथवेयर। जहां यादगार होता है हर एक किस्सा। इको रिट्रीट उड़ीसा। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, अंकल दुक्कल से पूछेगा, बाबा गुग्गल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड होकर ना 99 एकड़ से ही पूछना। भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सोमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सोमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। Yes, Papa. Life doesn't stop for anyone. Even we won't let you stop. At every stage of your life, with LIC, you are always insured. LIC, हर पल आपके साथ। Viewers, welcome back. Prime Minister Modi unveiled the commemorative postage stamps ahead of the auspicious inauguration of Ram Janmabhoomi temple set to take place on 22nd Jan in Ayodhya. Now, books of these 6 stamps have been issued around the world. Take a look at this detailed report for more. राम मंदिर का भव्य चित्र है। कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगलहारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। इनमें सूर्यवंशी राम के प्रतीक सूर्य की छवि है, जो देश में नए प्रकाश का संदेश भी देता है। इनमें पुण्य नदी सरयू का चित्र भी है, जो राम के आशीर्वाद से देश को सदैव गतिमान रहने का संकेत करती है। मंदिर के आंतरिक वास्तु के सौंदर्य को बड़ी बारीकी से इन डाक टिकटों पर प्रिंट किया गया है। Powered by Amity University, ranked amongst the top 3 universities globally. कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। Amity faculty have filed over 2100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सोमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सोमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत। बादलों पे चल के हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा। उम्मीदों के पंख कंधों पे लगा के मैं बनाऊंगा। बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत। बनाऊंगी मैं तो बनेगा।
स्किल, स्टील और दिल से बन रहा है भारत। AMNS इंडिया, स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नूं टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा, भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। बिजली ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation, so I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne, so now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। होता है हर एक किस्सा। इको रिट्रीट ओडिशा। Eat it on time and please ride the bike slowly. Okay. And this is for your safety. Arey, I almost forgot. LIC. This is for our safety. दिल की सुनो। LIC चलो। LIC हर पल आपके साथ। Central government announced a half-day closing till 2:30 p.m. on 22nd of Jan at the central government offices, central institutions and central industrial establishments throughout India on the occasion of Ram Temple Pran Prashishtha ceremony. City of Ayodhya is being decked with flowers ahead of the Pran Prashishtha ceremony of Ram Temple. Remember, the inauguration ceremony of the Ram Janmabhoomi temple is set to take place on 22nd of January. UP Minister Jaiveer Singh handed over 10,000 famous glass bangles from Firozabad inscribed with Jai Shri Ram written on it to the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust General Secretary. Powered by Amity University, ranked amongst the top 3 universities globally. हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और, वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया, ताकि पूर्णी
चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। वो काम ही कैसा काम जिसकी खोज किसी को अपनों से दूर ले जाए। सिर्फ इसलिए रंजीत के शहर में भी एक ऑफिस बना है और हमारे जवानों के कदम कभी न रुके। सिर्फ इसलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं कि इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पीएम श्री स्कूलों के 404 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले आधुनिकीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में उन्होंने लागू करते हुए 2020 में पूरे देश को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा दी और उसी श्रृंखला का हिस्सा है पीएम श्री स्कूल की योजना। इसके साथ ही प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक विद्यालयों में सुविधाओं के लिए 347 करोड़ की धनराशि भी हस्तांतरित की गई। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार की इस योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 5 करोड़ बच्चों को होगा। पुलाची जाना था, अगली बस कब है? गुरुजी, सालों के बाद देख रहा हूँ तुमको। आप पोलाची जा रहे हो ना? चलिए आपको ट्रक से छोड़ देंगे। अब ट्रक में सफर करना मुश्किल है। हमारा नया टाटा सिग्ना घर जैसा आरामदायक है। टाटा मोटर्स ने बड़ी लगन और समझ से बनाया है एक नया सिग्ना कैबिन जो आपके सेफ्टी, स्टोरेज और कंफर्ट की जरूरतों को पूरा करे। अब ड्राइवर प्रोडक्टिविटी होगी और भी ज्यादा। टाटा ट्रक्स, देश के ट्रक्स। आपने सोमानी का नया रोल देखा? वही स्टाइल और रेंज सोमानी बाथवेयर में भी। सोमानी बाथवेयर। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, अंकल दुक्कल से पूछेगा, बाबा गूगल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड होकर ना 99 एकड़ से ही पूछना। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स बड़े होने चाहिए। सोमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सोमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। I want to soar above the skies and fulfill my responsibilities with LIC. Paid your LIC premium on time. दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। Hi, what's that? That's a Manish Malhotra. Not your dress. The cupboard. The laminate is a Manish Malhotra design. Century Laminates by Manish Malhotra. Fashion for your furniture. Live it up, live it up. Gurudev, are the Muslims a part of this celebration? We are just days away from the Pran Prashishtha of the Bhavya Ram Mandir. Have Muslims actually accepted the reality? What is your sense of the Muslim community? Are they truly part of this celebration, or is there a feeling of angst inside them about the Ram temple? As far as I know, today there is very good feelings even among the Muslims. I don't see there is any such bickering. When I went and met about 1,200 imams and other religious leaders throughout the country during the mediation time, I tell you, except 2 or 3,
Everyone was willing to be part of it. Everyone was willing for a peaceful and happy settlement. Nobody wants to carry this on further anymore. And many of them have written, they're given in writing that they are ready to be part of peaceful settlement. Yeah. This is Republic Niva Bhupa Studio, your one stop for all the breaking updates. I am Rakshita Mishra. This is Republic Niva Bhupa Studios, your one-stop destination for all the breaking news updates, and I am Shivangi Shukla. Burning question, powered by Kent Oro. Ram Lalla's idol is installed inside the sanctum sanctorum. All eyes now on the grand Pran Prashishtha. But the India alliance is going all out to mar India's big moment. Stalin Jr. provokes with the mosque demolition remark. Akhilesh Yadav's leader and his uncle insults the Ram Bhaks. He says Karsevaks fired upon to protect the constitution. Congress leader fearmongers with a Kalyug remark. Karnataka unit breaks rank. It says will be visiting the Ram Mandir. भेजे जा रहे हैं वो कोई नहीं अभी ये जांच 2 साल से चल रही है 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला Under lens for Liquorgate, Arvind Kejriwal has skipped the enforcement directorate summon yet again. The BJP hits out and the BJP is asking him, what is it that you are hiding? After Iran's missile attack on Balochistan, Pakistan keeps troops on standby. Evacuation orders also put in place. Hello and a very good evening. You're watching The Burning Question and I'm Deepti Sachdeva. Mandir wahi banayenge lekin taarikh nahi batayenge. This is what the opposition said for the longest time when it comes to the BJP. Now, the opposition is saying Ram Mandir to jayenge lekin ab taarikh nahi batayenge. Because the opposition now, ladies and gentlemen, is divided. They do not know what to do. They do not have a narrative also to ensure that the Ram Mandir that the BJP is ensuring is getting consecrated, the Pran Prashishtha is happening, then millions of devotees, as